Good morning. Yesterday we were discussing about the continental shelf. I'll repeat again. The continental shelf is nothing but it is a part of the continent which has been submerged, because of which it is inside the ocean. So it is not a part of the ocean, rather it is a part of the continent in itself. Yes, we discussed that yesterday. On a nahi? Remember that, Adyasha? You remember? Somebody say something. Let me check whether I can hear you or not. You can hear me properly, all of you? Great. तो बात यह है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट. इट इज ट्रू ग्रेनाइटिक. यस, इट इज ओनली 1 to 2 डिग्रीज इसका स्लोप रहता है. वी हैव डिस्कस ओनली 1 to 2 डिग्रीज. इट्स वेरी वेरी शैलो, जिस वजह से पानी इज ऑल फोटिक. तो सूरज की किरणें हमेशा रहती है. इट इज ऑल लाइटेड अप. सिंस इट इज लाइटेड अप, इट हैज lot of productivity, biodiversity, and since it is the transition zone between the terrestrial ecosystem and the marine ecosystem, it has the characteristic of both. Thus it has flora and fauna which are associated with both what? Terrestrial ecosystem as well as marine ecosystem. Yes, we discussed all of this yesterday, remember? माना नहीं? एतिक और थिले ना. इसके आगे चलते हैं. चलो इसके आगे चलेंगे जब, what we are going to understand is continental slope. Continental slope is nothing but it is a transition between the continental crust as well as the oceanic floor. So it is a transition zone between the true granitic and true basaltic. Yes, this also I discussed yesterday, that it is a transition between true granitic and true basaltic. Now the next thing that is important is, let's consider the continental slope. कॉन्टिनेंटल जहां पे आपके लिए शेल्फ खत्म होता है, जहां पे शेल्फ खत्म होता है उसको हम बोलते हैं शेल्फ ब्रेक. फिर वहां से एक स्लोपी टोपोग्राफी होता है जो एक स्लोप के टाइप का होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप. तो जब पानी आता है, समुद्र पानीटा जेतेबेले आसुची कि नदी पानीटा जेतेबेले मिसुची, एई जगह पर आउ एपुर जाई परिबो, तळुकु ही खसिबो. जेतेबेले तळुकु खसिबो, इट विल स्टार्ट इरोडिंग दिस पार्ट. इट विल इरोड. को भलिया बने, गोटे नाळ भलिया, गोटे गात भलिया बने 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 चलियो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. So that particular eroded part is known as submarine canyon. What it is? It is called submarine canyon. I am repeating again. जब पानी ऐसा आया आपके लिए, कहां पे आया? It came till the shelf break. ये shelf break है, यहां तक आया. फिर उसके बाद पानी नीचे गया. जब नीचे जाएगा तो what it will do is, it will vertically erode the continental slope. When it will erode the continental slope, what exactly will happen is, it will create an eroded material which is known as submarine canyon. How many of you can imagine what I am just saying? It is called submarine canyon. Clear everyone? तो देखो, तो नदी जो सामान लेके आता है, जो इरोडेड मटेरियल होता है, इसके बाद तो पानी नीचे चलेगा. नीचे चलेगा तो यहाँ पे आके जमा करेगा कुछ, यहाँ पे छोटे 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 माउंट्स बना देगा.
जो भी नदी जो सामान लेके आती है वो इससे नीचे गिर जाता है, नीचे आके इसके फुट पे छोटे 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 डिपॉजिटेड माउंट्स बनाता है, जिसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। समझ आया या फिर से बोलूं? नदियां जो आपके लिए लेके आती हैं जो इरोडेड मटेरियल, वो यहाँ पे तो जमा नहीं हो सकती है बिकॉज इट इज ऑल स्लोपी। तो वो नीचे आके जमा होती है, नीचे छोटे 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 डिपोजिशनल माउंट्स क्रिएट होते हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। क्लियर? यस? होना नहीं? ग्रेट। बट हमेशा कॉन्टिनेंटल राइज नहीं होता है। कब नहीं होता है, कौन बताएगा मुझे? देयर आर सम टाइम व्हेन देयर इज नो कॉन्टिनेंटल राइज। व्हेन डू यू सी a condition when there is no continental rise? I'll give you an example. Check. ये देखो, ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है, सॉरी ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये स्लोप है, और ये ओशन फ्लोर है, एबिसल प्लेन। कभी कभी क्या होता है, बीच में इन दोनों के बीच में प्लेट बाउंड्री आ जाता है। जब प्लेट बाउंड्री आता है तो इस बीच में एक बड़ा सा ट्रेंच क्रिएट हो जाता है। तो ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल, ये जो नदी जो सामान लेके आता है वो इस गड्ढे में डाल देता है और कॉन्टिनेंटल राइज क्रिएट नहीं हो पाता है। whenever the continental slope has plate boundary on its vicinity, at that point we cannot form what? We cannot form continental rise. Otherwise there is creation of continental rise. So continental rise तब होगा जब आपके continental slope के पास प्लेट बाउंड्री नहीं होगा। अगर प्लेट बाउंड्री होगा तो जो गातोटा क्रिएट है, जो ट्रेंचटा क्रिएट है, तो जेतिकी भी इरोडेड मटेरियल अछि ता भीतर को पळेबो और कॉन्टिनेंटल राइज फॉर्मेशन हबो नहीं। केते लोग क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड। अध्याशा, मधुस्मिता, बुझिलो ना बुझिलो? मैं आउ थरे रिपीट कर दो that whenever there is the creation of continental rise, that means there is no plate boundary nearby. If there is the plate boundary which is at the foot of the continental slope, then what happens is the entire eroded material falls inside the trench. There is no creation of continental rise. तो कॉन्टिनेंटल राइज क्रिएशन होने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन यह है कि आपके स्लोप के पास प्लेट बाउंड्री नहीं होगा। अगर होगा तो ये नहीं हो सकता। क्लियर एवरीवन? ग्रेट। Now we will learn about abyssal plain. एबिसल प्लेन या डीप सी प्लेन कुछ भी बोल सकते हैं। जेमिति की we have read that we in the continental crust we have mountains, we have plateaus, we have plains, everything is there. Similarly on the ocean floor also you have all of this feature. You have mountains, you have plateaus, you have plain, सब कुछ ही है। बट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक फ्लोर इज दैट एक के ऊपर पानी है, दूसरे के ऊपर पानी नहीं है। दैट मीन्स we have first order relief feature, second order relief feature and third order relief feature. All three are located inside the deep sea plain.
सब कुछ वहां पे अवेलेबल है, आप नहीं बोल सकते कि वो कुछ अलग है, वो कुछ भी अलग नहीं है, बस उसका एक ही कैरेक्टर है कि वो समंदर के अंदर है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। अदरवाइज अगर वहां से पानी चले जाए, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ जैसे आप और हम लैंड के ऊपर जी रहे हैं वैसा ही है, so it's all same. So that is what I wanted to tell you, that abyssal plain has first order relief feature, that means the one which was created at the time of formation of the earth. It has second order relief features, that means it has all the relief features which were created due to endogenic forces. It has third order relief feature, that means it has the relief features which were caused due to the exogenic force. तो तीनों के तीनों लोकेटेड है, अवेलेबल है कहां पे, एबिसल प्लेन में। तो एबिसल प्लेन में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको मिलेंगे, एक है फर्स्ट इज व्हाट, मिड ओशनिक रिजेस, सेकेंड फ्रैक्चर जोन्स, थर्ड सी माउंट, फोर्थ गियोट। ये चार टोपोग्राफिक फीचर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन यू स्टडी द ओशन वाटर टोपोग्राफी। जब आप ओशन वाटर टोपोग्राफी को पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ आई आस्क अ क्वेश्चन, हु विल टेल मी व्हाट इज दिस मिड ओशनिक रिज? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट व्हेन आई वाज टीचिंग यू प्लेट टेक्टोनिक्स। कौन बताएगा मुझे, बताओ। मधुस्मिता, विल यू टेल मी व्हाट इज मिड ओशनिक रिज? I had already explained, right? What is mid oceanic ridge? Let's say there are two plates which are diverging, oceanic plates, they are diverging. When they diverge, there is volcanism. तो volcanic activity होके यहाँ पे लावा कलेक्ट हो जाता है, लावा कलेक्ट होके छोटे 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 पहाड़ बनाता है, जिसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। ये मैंने पढ़ाया था आपको when I was teaching you sea floor spreading, you remember? Yes, I have explained, right? तो these mid oceanic ridges are a part of the ocean bottom. ओशन बॉटम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मिड ओशनिक रिज। एक सेकंड, हेलो, नहीं था। तो मिड ओशनिक रिज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एबिसल प्लेन। दूसरा वाला मैंने आपको बोला फ्रैक्चर जोन्स और एंसिलियरी रिजेस। कहीं कहीं क्या होता है, जमीन फट के, धरती फट के बीच में फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर देती है समंदर के अंदर। कहीं कहीं क्या होता है, वो समंदर के अंदर फॉल्ट लाइंस क्रिएट करते हैं, फोड़ देता है ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस। तो जहां पे ये होता है, ये फॉल्ट लाइन को हम बोलेंगे फ्रैक्चर जोन्स। और अगर एक मिड ओशनिक रिज के साथ और बहुत सारे रिजेस हैं, वो साथ वाले रिजेस को हम बोलेंगे एंसिलियरी रिजेस। फ्रैक्चर जोन अलग है, एंसिलियरी रिज अलग है। एंसिलियरी रिज इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द मेन मिड ओशनिक रिज, उसके साथ वाले जो होते हैं एक्सटेंशन करते हैं उसको, उसको हम बोलेंगे एंसिलियरी रिज। फ्रैक्चर जोन टेंशनल फोर्स की वजह बीच में से फट जाता है, सेपरेशन हो जाता है, उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर जोन्स। ओके, क्लियर एवरीवन? होना नहीं? ओके, नेक्स्ट।
सी माउंट एंड ग्योट। ये सी माउंट क्या है जी? कोई अगर आपसे पूछे कि ये सी माउंट क्या है तो आप क्या बोलोगे? व्हाट विल बी योर आंसर? ओम प्रकाश कौन को जाओ? हाँ, very good, is correct. Like I told a few minutes back that when you compare the not volcanic, not only volcanic, it can be anything. For example, inside the ocean, if you have mountains, that means they are second order relief features created due to endogenic activities, yes or not? So these mountains are known as sea mounts. Getting my point? They are second order relief feature which have been submerged under the ocean. तो जो भी सबमर्जेंस होके जो पहाड़ अंदर रह जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सी माउंट। ओके, नेक्स्ट। तो ग्योट क्या आएगा? देखो, एक सी माउंट आया, ये एक सी माउंट है, बट पानी का लेवल यहां तक नहीं है, वो पूरा नीचे नहीं है, पानी का लेवल यहां तक है। पानी का लेवल यहां तक है तो बार 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 पानी इसको इरोड करेगा, इरोड करेगा, इरोड करेगा, इरोड करेगा, इरोड करेगा, तो बाद में उसको फ्लैट टॉप कर देगा, ऊपर वाला पार्ट उड़ गया। ड्यू टू इरोजन बाय द ओशन वाटर, द टॉपमोस्ट पार्ट इज इरोडेड। When the topmost part is eroded, it becomes flat top. So these flat topped sea mounts are known as gjords. Write down. The flat top sea mounts are called gjords. Which have been which have been eroded by the ocean water, thus making the sea mount flat top. Clear? Understood? तो ये हो गया फिजिकल फीचर्स। नाउ वी विल लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। ओशन वाटर सैलिनिटी। ये क्या है जी ओशन वाटर सैलिनिटी? हाउ आर वी गोना डिफाइन ओशन वाटर सैलिनिटी? एनीवन? व्हाट इज ओशन वाटर सैलिनिटी? कोई बताएगा मुझे? Write down. It is the amount of dissolved substances in the ocean water there are 47 different types of sea salts. There are 47 different types of sea salts. 47 different types of sea salts.
However, sodium chloride, sodium chloride, sodium chloride consists of almost 80%, 80% of the ocean water salinity. फिर मेरे को मधुस्मिता पूछेगी सर ओशन वाटर सैलिनिटी तो ठीक है आपने बोल दिया ओशन वाटर सैलिनिटी है, आप मुझे एक बात बताइए सर ये ओशन वाटर सैलिनिटी क्या हर जगह सेम होता है पूरा ओशन भर? हम अगर अपने कन्याकुमारी से चले गए जामनगर तक या फिर कन्याकुमारी से चले गए यहाँ पे गंगा सागर बंगाल तक, क्या सर हर जगह सैलिनिटी सेम होता है या कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं सर विच डिसाइड्स हाउ मच इज द सैलिनिटी? Is the salinity constant across the oceans or there are factors which decide how much of salinity will be there? क्या होता है बताओ? Is the salinity constant? Yes? No. Why is it not constant? What are the factors? These are the factors which will decide. पांच नंबर है ओशन currents. Now, who will explain it to me one by one how these factors are responsible for ocean water salinity? Yes, anyone? Anyone? Om Prakash, will you try? Suno. I had taught in the earlier sessions during climatology that as you move from the equator towards the poles, as you move from the equator towards the poles, the insolation reduces on a night. Yes or not? Temperature reduces. Yes, we discussed this. On a night. We discussed, right? Now, when the temperature is reducing from the equator to the poles, insolation is reducing. जब reduce कर रहा है, एक बात बताओ, जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे इवेपोरेशन भी कम होगा, on ना नहीं? अरे ये सब जोटी इवेपोरेशन बेसी हबो सेठी सॉल्वेंट टा उडी गला सॉल्यूट टा रही गला, on ना नहीं? So wherever you have higher evaporation, salinity will be higher. So in the lower latitudes, evaporational losses will be higher, thus salinity will be higher because solvent has evaporated, only the solute is there. नमक रह गया, पानी उड़ गया, तो percentage of salt in that water will increase, salinity will increase. Yes or not? हाँ ना नहीं? Very good. So as you move towards the, what do you call that, poles, temperature reduces, insolation reduces,
Ideally, ideally, salinity should reduce due to lesser evaporation. Anshuman, did you understand or not? Adhyasa, Anshuman, Ashu, काजू काजू कैसा नाम है रे काजू काजू ये अपना काजू है क्या यस अंडरस्टूड एवरीवन ठीक है नेक्स्ट गिव मी अ सेकंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट कम्स इनटू पिक्चर प्रेसिपिटेशन जहां पे बारिश ज्यादा होगी जिस पार्ट में समंदर के जिस पार्ट में बारिश ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा वहां पे सॉल्वेंट बढ़ जाएगा सल्यूट का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा यस और नॉट गोटे जगार पानी थिला 10 ml 10 ml रे तम पई थिला लूण लेट से 10 ग्राम सेमिति से 10 ml ऊपर आउ 10 ml वर्षा हे गला सो 20 ml में 10 ग्राम हो गया तो परसेंटेज के हिसाब से सॉल्यूट कम हो गया या नहीं सैलिनिटी कम हो जाएगा या नहीं तो वही है जहां पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा वहां पे सैलिनिटी कम हो जाएगा जहां पे कम प्रेसिपिटेशन होगा वहां पे सैलिनिटी ज्यादा रहेगा हाँ ना नहीं राइट आउट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन increase in precipitation the solvent quantity increases resulting in lesser proportion of lesser proportion of lesser proportion of solute thus lesser salinity whereas in areas with lesser precipitation with lesser precipitation lesser precipitation salinity will be higher salinity will be higher next इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर मैं आपको एक बात बताता हूं ये एक मैप में बताता हूं आप देखो नर्मदा तापी माही साबरमती इंडस बाकी छोटे 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 नदी अरेबियन सी में गिरते हैं इधर गंगा बराक ब्रह्मपुत्र सुवर्णरेखा बूढ़ा बूढ़ा बड़ंग
ब्राह्मणी, आगे बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, yes, Rushikuल्या, then you have Godavari, Krishna, वैगई, पेन्नार, कावेरी। कहां पे ज्यादा नदी है मुझे बताओ, ईस्टर्न कोस्ट में या वेस्टर्न कोस्ट में? ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट में जब फ्रेश वाटर आ जाएगा, फ्रेश वाटर इनफ्लक्स, will it not reduce the salinity? Yes or not? Will it not reduce the salinity? On or nahi? It will reduce the salinity. Whereas in the Arabian Sea, the amount of fresh water influx is less, so it will not have much of an impact on the salinity. But on the Bay of Bengal side, fresh water influx is immense, resulting in a higher proportion of solvent. Thus, the proportion of solute will reduce. Thus, salinity will reduce. Write down. Oceans. Oceans with higher influx of fresh water will result in will result in lesser salinity, whereas oceans with less amount of influx of fresh water will have higher salinity. Okay, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ର ବେଶୀ ରହିବ salinity ନା Arabian Sea ର, ମତେ କହିଲ? Arabian Sea, very good, because influx is less. What was the next point we discussed? What was the next factor I talked about? Yes, what is the next factor? We discussed about influx of fresh water, we discussed about precipitation, we discussed about temperature, continentality. बढ़िया point. कॉन्टिनेंटलिटी मीन्स, देखो ये इंडिया है, यहाँ पे पानी अंदर घुस गया है लैंड के पास, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, जहां पे द वाटर पेनिट्रेट्स इनसाइड एंड इज इन क्लोज contact with the land. So the Bay of Bengal is a marginal water body, we call it a marginal water body, so it is continental because it is surrounded by the continent, the ocean, the land. Now the question is, when the particular water, ocean water, is totally surrounded by, let's say I am talking about tropical areas, let's take the example of tropical area. तो यहाँ पे पानी अंदर गया है, when it has gone inside, when it is penetrated inside, it is in close proximity to the land. So what happens is, लैंड तो गर्म होता ही होता है, उसके कांटेक्ट में आके पानी भी गर्म हो जाता है. पानी जब गर्म हो जाता है
तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो सैलिनिटी बढ़ जाती है. सो कॉन्टिनेंटल वाटर्स इन द ट्रॉपिकल एरियाज आर मोर सलाइन व्हेन कंपेयर्ड टू द ओपन ओशनिक वाटर. जो यहाँ पे है पानी, ये पानी ज्यादा सलाइन होगा इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि वो लैंड के कांटेक्ट में है, लैंड के कांटेक्ट में है और गर्मी ज्यादा होने के कारण इवेपोरेशन ज्यादा होता है. बुझलो ना बुझलो नहीं? How many of you understood? आशु, मधुस्मिता बुझेला, अंशुमान, अध्याशा, अभिप्सा. ओके, तो सेम एग्जांपल हम लेंगे टेम्परेट एरियाज. टेम्परेट एरिया में लैंड ठंडा रहता है ज्यादा, टेम्परेट एरिया में लैंड ज्यादा ठंडा रहता है. जब ज्यादा ठंडा रहता है तो पानी भी उसके कांटेक्ट में आके ठंडा ही रहता है. सो दिस इज कोल्डर देन द ओपन ओशन. तो ओपन ओशन ज्यादा गर्म होने के कारण यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा रहता है, यहाँ पे सैलिनिटी कम होता है. सो कॉन्टिनेंटल एरियाज इन ट्रॉपिकल एरियाज have higher salinity when compared with the open ocean. In the temperate regions, the continental water is having lower salinity in comparison to the open ocean. क्योंकि वो जिस लैंड के पास है वो लैंड बहुत ठंडा है टेम्परेट एरियाज में, हायर लैटिट्यूड में, तो वो भी ठंडा हो जाता है. ठंडा होने के कारण क्या होता है, वो कम इवेपोरेट करता है इन कंपैरिजन टू द ओपन ओशन. बुझला ना बुझला नहीं? कॉन्टिनेंटलिटी. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? I hope everyone understood. I don't think there is much of understanding. You just have to use little bit of your brain. But the point is, we don't use our brain. We just leave our brains at home. Yes? Everyone clear? There is one more ocean current which I will not discuss because I will discuss it tomorrow. In the next class, because I have to teach something known as ocean currents. जब वो पढ़ाऊंगा तो उसके साथ. फिर अंशुमन आके मेरे को पूछता है, सर एक बात बताओ, आपने इतना बोल दिया, लैटिट्यूडिनली सारा आप मुझे बताओ कि सैलिनिटी कैसे चेंज होता है. लेट्स से दिस इज 0 डिग्रीज इक्वेटर, दिस इज 90 डिग्रीज पोल्स, दिस इज 60 डिग्रीज, दिस इज 30 डिग्रीज. तो सर आप मुझे बताओ 0 डिग्री में कैसा रहेगा सैलिनिटी, 30 डिग्रीज में कैसा रहेगा सर सैलिनिटी, 60 डिग्रीज में सर कैसा रहेगा सैलिनिटी, और 90 डिग्रीज में कैसा रहेगा सर, आप बताओ मेरे को. इक्वेटर से पोल तक कैसे डिफरेंस होता है सर, आप बताओ. तो कौन बताएगा मुझे? एनीवन? कहीं किलो? ओके, फिर चलो मैं आपको बताता हूँ. आइडियली सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे होता है, इन सब एरियाज को लेके जाएंगे. सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ होता है क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट गिरती है, हाँ ना नहीं? 0 डिग्रीज में सूरज की किरणें डायरेक्ट गिरती है. जब डायरेक्ट गिरती हैं तो भाई ये ज्यादा गर्म होता है, हाँ ना नहीं? यस और नॉट? तो बेसी गरम हैला माने इवेपोरेशन भी बेसी होगा. इवेपोरेशन हैला माने बादल बनेगा, बादल बनेगा तो बारिश भी होगी. सो हाई इंसोलेशन, हाई प्रेसिपिटेशन, दैट इज वाई बारिश होने के कारण यहाँ पे सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ जाता है. तो इस उतना ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे सैलिनिटी मॉडरेट होता है, अराउंड 32 to 33 पार्ट्स पर थाउजेंड.
मतलब 33 ग्राम्स पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये है यहाँ पे। 30 डिग्रीज में जब हम आएंगे, यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे बारिश सीजनल है, यहाँ पे बारिश डेली होता है बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट डेली सीजनल रेनफॉल, हाई इवेपोरेशन, सीजनल रेनफॉल, हाई इवेपोरेशन। तो 80 बेसी रहिबो सैलिनिटी 36 टू 37 पार्ट्स पर 1000, तो सबुठु बेसी 8 रहिला। तापर इधर टेम्परेट एरियाज को जीवो मॉडरेट इवेपोरेशन, मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे मॉडरेट ही रहता है, अराउंड कितना रहता है 34 टू 35, इतना ही रहता है। यहाँ पे और भी कम, लो इवेपोरेशन, बहुत ठंडा एरिया है, लो प्रेसिपिटेशन, फ्रेश वाटर ऑटोमेटिकली पहुंचा बर्फ, तो यहाँ पे अराउंड 31 टू 32 पार्ट्स पर 1000। तो सबुठु बेसी हैला ट्रॉपिकल एरियाज रे, उसके बाद टेम्परेट में, उसके बाद आपके लिए आता है इक्वेटोरियल एरिया, उसके बाद आता है पोलर एरिया। अपना एक एक जगह का खुद के कैरेक्टर के वजह से ऐसे चेंजेस आते हैं। बुझी पारलो ना बुझी पारलो, how many of you understood, please raise your hand. Utkalika able to understand? I am repeating again that in the इक्वेटोरियल एरियाज आपको लगेगा गर्मी ज्यादा है, हाँ इवेपोरेशन ज्यादा है, हाँ इवेपोरेशन ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा हुआ, बट व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू हाई इवेपोरेशन देयर इज हाई प्रेसिपिटेशन आल्सो, व्हेन देयर इज हाई प्रेसिपिटेशन सैलिनिटी रिड्यूसेस, सो वहां पे मॉडरेट हो जाता है। जबकि 30 डिग्रीज में बारिश 3-4 महीने ही होती है, इक्वेटर में रोज बारिश होती है, यहाँ पे 3-4 महीने ही बारिश होती है, गर्मी हमेशा रहता है, तो इवेपोरेशन हमेशा रहता है, पर बारिश उतना नहीं होता है, सो यहाँ पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी रहेगा, बाकी टेम्परेट में मॉडरेट एंड पोलर में लो, होना नहीं। कितने जना बुझी गल? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। Anyone has any questions? You can ask. You want to ask anything? You can ask. Okay. Then again, Madhusmita comes. Madhusmita, sir, आपने कही देले कि सर सैलिनिटी कैसे जाता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। सर मोर दरकार नहीं सेटा जानिबा, मते कहंतु धर मु टॉप ऑफ द ओशन रु बॉटम ऑफ द ओशन को गली, ताहले सर मते कहंतु सैलिनिटीटा केमिति वेरी करिवो, डेप्थ हिसाब रे सर मते कहंतु केमिति सैलिनिटी वेरी करिवो, सेटु तापे गोटे डायग्राम बना हबो। चलो गोटे डायग्राम बनेबा, विल मेक अ डायग्राम। चलो yes, you tell me from this particular diagram what do you understand कि सैलिनिटी क्या होता है जब आप ऊपर से नीचे तक जाते हैं। जब आप ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो सैलिनिटी क्या होता है, डायग्राम देख के बताओ।
Yes, anybody? सी 500 मीटर पर्यंत तुम्हें देखिबो सैलिनिटी इज कांस्टेंट, ऊपर ऊपर कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही चलते रहता है, नमक घूमते रहता है, कुछ नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट रहता है। 500 मीटर के बाद देखो एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह कम हो रहा है। कहां पे बढ़ रहा है, कहां पे कम हो रहा है? देखो पहले इधर कांस्टेंट है, इट्स ऑल कांस्टेंट, फिर यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज। when you go to the polar areas, when you go to the polar areas, पोलर एरियाज में क्या होता है, ऊपर वाले में सरफेस वाटर बहुत ज्यादा आता है, जो फ्रेश वाटर आता है बरफ पिघली तो तले टिके टिके जमा हो जाए, तो से पोलर एरियाज रे 500 मीटर पर टिके टिके बढ़ी जाए, कहीं ऊपर फ्रेश वाटर बहुत बेसी था। किंतु जिते बड़े तुम्हें इक्वेटोरियल एरिया को जीव, इक्वेटोरियल एरिया रे ऊपर बेसी कौन हम इवापोरेशन हम, इवापोरेशन हेले लुणटा ऊपर ऊपर टिके रहिबो, सो जोटी बढ़िला सेटा हला पोलर एरिया, और जोटी कमिला सेटा हला इक्वेटोरियल एरिया, तापरे ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हे, तापरे आउ बढ़े नहीं कमे, जहां हुए 500 रु 1500 मीटर पर भीतर। तो व्हेन वी टेक द पोलर एरिया इनटू कंसीडरेशन, पोलर एरिया में थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर आपके लिए क्या रहता है, फ्रेश वाटर, इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो थोड़ा नीचे आने से थोड़ा वहां पे सेटल डाउन करता है आपका सॉल्ट। जब आप इक्वेटोरियल एरिया में जाते हैं ऊपर ऊपर ज्यादा इवेपोरेशन होता है, तो ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज हायर व्हेन कंपेयर्ड टू द, तो ऊपर थोड़ा ज्यादा रहता है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। I hope then it becomes constant from 1500 meters onward. So this is called the S curve, salinity curve, which explains how the salinity changes with depth. How many of you understood? Now thir koi bhi, do you want me to tell again? If you want me to tell again, please give me a thumbs up. Okay. At the top till 500 meters, what happens is the salinity is almost all constant, because वहां पे उतना कुछ पता नहीं चलता है, it settles down. The salinity, the saline particles, the salt, it settles down slowly. 500 से 1500 के बीच में in the equatorial area it reduces, because ऊपर ऊपर बहुत evaporation होता है, तो नमक concentration ज्यादा रहता है in comparison to 500 से 1500, तो वहां पे थोड़ा कम हो जाता है। पर जब आप पोलर एरिया जाते हैं, ऊपर क्या रहता है, ज्यादा फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स रहता है, बर्फ पिघलने का चांस रहता है, तो वहां पे ऊपर फ्रेश वाटर ज्यादा, जब आप नीचे आते हैं थोड़ा नमक ज्यादा रहता है, तो पोलर एरिया में थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद 1500 मीटर से नीचे तक 4000 मीटर तक इट इज ऑल कांस्टेंट, देयर इज नो change, it is almost all constant. This is how salinity changes. How many of you are clear? So salinity as a concept, everybody is clear? So in the next class we will learn about temperature, ocean water temperature and ocean currents, ये दोनों को हम अगले टॉप क्लास में लेंगे। उसके बाद वाले क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पढ़ाऊंगा, पूरा क्लास एक ही चीज लूंगा, दैट इज कॉल्ड एल नीनो। आई विल ओनली टीच एल नीनो उसके बाद वाली क्लास में, so that people who are appearing for the एग्जाम दिस टाइम अराउंड आर टोटली क्लियर। मंडे ट्यूसडे तक आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म, उसके बाद हम इंडिया पे फोकस करेंगे, ठीक है? चलो, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ठीक है, चलो बाय बाय।